Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist, and you are watching Dr. KK's Med Talks, Mondays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 939th 939वां एपिसोड है. Let's have the headlines for today. Now, artificial intelligence is the buzzword. और अगर इंटेलिजेंस तो हम समझ गए, वो तो हो गया ज्ञान, बट आर्टिफिशियल क्या होता है? बट स्टिल वी सी दैट इट्स अ बज़वर्ड. People are saying that artificial intelligence has to be embraced for cutting edge medical research. Artificial intelligence has to be embraced for cutting edge medical care delivery. And the WHO, the World Health Organization, has issued guidance on safe implementation of AI, artificial intelligence in medicine. A new AI tool can lead to precision medicine because it helps predict drug response. And also, in development of drugs at Switzerland, they have used artificial intelligence to develop innovative methods of telling us the optimal method for synthesizing drug molecules. Every college across the country, AIMS New Delhi, AFMC Pune, all are using artificial intelligence now. So let's see what our topic is for today. Are we ready? Are we ready for the next revolution in medicine, artificial intelligence? If we are, so is our guest. And a warm welcome to Dr. Niket Verma. Warm welcome, Dr. Sir. Thank you so much, sir. Very good evening. Thank you, Dr. Niket. Dr. Niket is consultant in medicine at the prestigious All India Institute of Medical Sciences, Bathinda, Punjab. A profound passion not only for clinical work, but also for teaching, medical teaching, and technology. He is a trailblazer in the field of healthcare, and he has worked for various organizations across the country. And now he contributes his best towards improving the health of the Malwa region in Punjab and beyond. Warm welcome, Dr. Sir. Thank you, sir. डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, एमडी मेडिसिन है, सबसे मुश्किल ये वाला सब्जेक्ट माना जाता है. द पर्सन हु नोज मेडिसिन नोज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर. सबसे अच्छा क्या लगता है बीइंग अ फिजिशियन? सबसे मुश्किल क्या लगता है? सर, सबसे अच्छा लगता है, I think, teaching students. I think that is a passion that brought me to work in a medical college. I was with the Army College of Medical Sciences for about 5+ years in Delhi before I joined AIMS Bathinda. And it's the passion to teach that drives me. And I work in the field of medical education. And as many of our viewers must be aware that the medical curriculum has been undergoing a lot of changes over the past few years. So it's a very exciting time to work as a medical teacher and see this transformation of medical education in our country. So that is the best thing about the profession. And सबसे मुश्किल, sir, of course, newer challenges in treatment, newer diseases, especially after COVID. The challenges never stop. I mean, it's one challenge after another every day, because after all, it's human life. So you have to be doubly careful. And yes, sir, this is the best and the most challenging part of my profession. So I think your students are blessed. They are very lucky. And a warm welcome to you from Rekha Batara madam. Swapna Jain madam is from Vellore. वहाँ पे बारिश बहुत हो रही है because of the cyclone. So Swapna Jain ji and everybody else in Chennai and around, please take care of yourself. अपना ख्याल रखें. Dr. Rameshpal Singh Pawar is from Saharanpur. और आप मेरठ के पढ़े हुए हैं. So same part of the country, same part of UP. डॉक्टर साहब is a 73-year young pediatrician. वो आपको नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरठ का नाम रोशन करते रहें. नमस्कार सर. ऐसा है क्या डॉक्टर निकेत के मतलब पहले जो बैक्टीरिया थे, वायरस थे, बड़े शरीफ किस्म के होते थे, या तो वो बड़ी माता टाइप वाले थे कि आपको ऊपर ले जाएंगे, या छोटी माता टाइप वाले थे कि थोड़ी सी गुदगुदी करके चल जाएंगे, द स्मॉल पॉक्स वर्सन चिकन पॉक्स. और अब वे बड़े नटखट हो गए हैं, दे ना छोड़ के जाते हैं, ना जीने देते हैं चैन से, ना पता चलता है सर है क्या चीज. और डॉक्टर को भी परेशान करते हैं. ट्रू. मुझे भी कई बार लगता है, एक तरफ तो जो दीज न्यू बैक्टीरिया एंड द न्यू वायरसेस हमारी किताब ही नहीं पढ़ के आते, तो मान लो हमारी हैरिसन्स लिखती है कि 4 दिन में बुखार ठीक हो जाना चाहिए. अब वायरस भैया को या बैक्टीरिया बहन को पढ़ना चाहिए ना कि और 4 दिन में चल जाए, तो एक तो वो नहीं होता. एंड इफ दैट वाज नॉट इनफ, नाउ वी हैव नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो वो भी बढ़ते जा रही हैं. And AIMS Bathinda is at the forefront of fighting non-communicable disease also. Yes, sir. So, sir, with all these challenges,
new types of communicable disease, new types of non-communicable disease. Uh, how does artificial intelligence come into play? How do we improve our intelligence? So, sir, I mean, we'll talk more on this in the presentation, but artificial intelligence, we'll talk about one very interesting term called AI warfare. And like you mentioned कि आजकल के वायरसेस और बैक्टीरिया जो हैं वो पढ़ के नहीं आते बुक्स में. एंड कोविड के टाइम पे बहुत बात चली थी यार, आई विल नॉट नेम एनी कंट्री, बट वी ऑल नो दैट सर्टेन कंट्रीज वर अक्यूज्ड कि वो लैब्स में आर्टिफिशियल वायरसेस ग्रो कर रहे थे एंड इस पे काम कर रहे थे. सो एआई वॉरफेयर इज वन थिंग विच इज आई वुड से द डार्क साइड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, where certain countries who have the technological prowess with them, जिनको जिनके पास शायद because they are economically more powerful, they have these latest technologies. And is it really something which can help countries genetically engineer viruses or bring in some sort of artificially intelligent viruses which can target a particular subset of the population of the world? So ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा खतरा है एआई का. सो इसकी बात करेंगे सर प्रेजेंटेशन में. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत गुड साइड है, लाइक यू मेंशन्ड, वेयर प्रिसिशन मेडिसिन आपने सर नाम लिया. वी आर गोइंग इनटू द मॉलिक्यूलर और द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवरी इंडिविजुअल. सो वन साइज फिट्स ऑल से हम एक्चुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रिसिशन मेडिसिन. और एक साइड सर ये डेंजरस वाला है. सो हाउ डू वी ड्रॉ द लाइन एंड वेयर डू वी एज डॉक्टर्स और मेडिकल एजुकेटर्स कम इन बिटवीन? वील टॉक ऑन दिस सर. आपको ग्रीटिंग्स आ रही हैं उज्जैन से भी, डॉक्टर प्रदीप रावल है वहाँ, एंड रेखा बटारा मैडम भी मेरठ से हैं, तो 3 चीयर्स अगेन फ्रॉम मेरठ. हम लोग अपने आप को बोलते हैं होमो सेपियंस, मतलब पहले कहा करते थे कि हमारी जो स्पीशीज है दैट इज होमो सेपियंस. सेपियंस का मतलब इंटेलिजेंट, सैपियो से आता है ये वर्ड. बट रिसेंटली, हाल ही में कुछ साल पहले, हमने अपनी स्पीशीज का नाम बदल दिया. नाउ वी कॉल आवरसेल्व्स होमो सेपियंस सेपियंस. So we are the Homo sapiens, intelligent species who know that we are intelligent. And Bimla Kapoor ji has joined in at the right time because of Dr. Niket. हमें Homo sapiens से Homo sapiens sapiens बनाने लगे हैं. So now we learn more about artificial intelligence और हम भी intelligent बन जाएंगे. So Dr. Niket, the floor is yours. We look forward to learning from you, sir. Thank you so much, sir. And I'll start by thanking Dr. Sanjay Kalra, sir, for giving me this opportunity, and greetings to all the viewers who are watching this session. The topic we are discussing today, very interesting. It's on artificial intelligence, or what I call, as the next revolution in medicine. And like I mentioned earlier, मैं medical education में काम करते आ रहा हूँ पिछले almost more than a decade से. And how, this is not only in medicine, but also in medical education. We are finding growing use of AI or deep learning or machine learning. हम आमतौर पे ये वर्ड सुनते रहते हैं. I mean, we keep hearing about deep learning, machine learning, chat GPT. आजकल बहुत बात हुई थी. पीजी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, उनके ऊपर रोक लगाई गई थी कई कॉलेजेस में, that they should not copy, use AI tools for making their thesis protocols. Similarly, articles लिखने के लिए बहुत सारे researchers जो हैं वो AI tools का use कर रहे हैं. So as all the viewers will agree, medicine is not only the clinical medicine, but we also have research and we also have teaching, so medical education, and all these things are interconnected. And let's see whether we are actually ready for this new revolution. इसका हमें फायदा है कितना है, इसका हमें नुकसान है तो कितना है, और challenges क्या हैं, what should we know about AI and how should we be prepared for the future. So we'll delve right into the topic. And the first thing is that we are living in an era of AI. So machines are combining all the human senses, and हमने movies में देखा है बहुत commonly. So Terminator was one of the first movies which showed us the world of artificial intelligence. Matrix में, आजकल video games में, many people who play online games or who are big fans of video games, there is something called as those virtual reality VR goggles. Even in televisions you have those 3D glasses and VR glasses जो कि आपको एकदम ऐसा feel कराते हैं that you are actually standing at the scene of the action. So we have seen these things extensively depicted in cinema. What comes to my mind as a medical educationist or as a clinician, is it dangerous? क्या ये बहुत खतरनाक चीज है? Is it an asset that we can use to our advantage? Will artificial intelligence make me as a doctor redundant? हो सकता है फ्यूचर में मेरी कोई ज़रूरत ही ना रहे. Will that time really come? And will humanity always win in the end? So ये हम बिल्कुल एंडिंग में देखेंगे इस प्रेजेंटेशन की कि ह्यूमन टच क्या ऐसी एक खास चीज़ है which only a human being can have. And ये आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी भी इंटेलिजेंट बन जाएं, they will not have that humane touch or what we call as empathy. आजकल बहुत बात होती है empathy की, and we'll talk about this also. There are 3 overlapping concepts, so I have simplified this. I've made it as simple as possible.
तीन overlapping concepts हैं. One is artificial intelligence, we'll call this as AI. One is machine learning, so we'll call this as ML. And finally, we have something called as deep learning, and we'll call this as DL as we move ahead. Artificial intelligence क्या है? It is actually just very simply the display of human intelligence by machines. So कोई भी artificially made चीज जैसे कि कोई machine या कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम अगर human intelligence display करता है, very simply that is how we define artificial intelligence. And this term was first coined by the John McCarthy in the year 1956. एक होता है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बात करा टर्मिनेटर या मैट्रिक्स मूवी के बारे में, where artificial intelligence is actually able to function just like a full grown human being. What we have actually been able to achieve although is something called as narrow AI. हम उतना अभी जनरल widespread AI तक नहीं पहुंच पाए हैं. So हमारे पास जो भी AI की फंक्शनैलिटी है, that is exhibiting only some facets of human intelligence. They can perform some tasks, maybe even better than human beings. आगे हम बात करेंगे, जैसे हम रेडियो डायग्नोसिस की बात करें या dermatology की बात करें, there are AI programs which are better at diagnosis than even human doctors with years of experience. लेकिन हर चीज में अभी वो facet display नहीं कर पा रहा है. Every aspect is not being exhibited. So what we are currently experiencing is a narrower concept of artificial intelligence. Emotional concept is still lacking in the AI programs that we have. Machine learning is an approach to achieve AI. So it is basically आप एक मशीन को सिखाते हैं, दोबारा सिखाते हैं, 3 बार सिखाते हैं, 4 बार, हजारों बार, लाखों बार सिखाते हैं धीरे धीरे, ताकि उसमें एक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस धीरे धीरे डेवलप हो जाए. That is what we aim to achieve. So it may be completely supervised or it can be semi supervised, and these days even unsupervised by a programmer. But it is just simply an approach to achieve artificial intelligence. Then we come to the very interesting, the third concept, that is deep learning. Now, deep learning is a subtype of machine learning, but it is at a much deeper level, and this is in inverted commas, so it's a much, much deeper level. It's very heavily inspired by the structure and function of the brain. Now, let us look at the example of a human being. When a child is born, the brain is absolutely, fresh. It knows nothing. It is, entering the world for the first time. और एक बच्चे को, whether it is language training, whether it is training how to walk, whether it is training how to hold a pencil, whether it is training how to speak, training how to eat, everything has to be, trained. Very few functions are actually known to the human brain when a child is born. So similarly, deep learning भी ऐसी एक चीज है कि जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, instead of acting like a parent, what we call as a programmer, कि हम supervise कर रहे हैं machine learning को, we are actually reaching a stage of, let us say, some sort of adulthood where it is unsupervised, where we are competent enough to take decisions on our own, and that is what is deep learning. So ये brain के structure से, human brain के structure से बहुत inspired है deep learning. It allows a computer program to analyze a problem and come up with solutions on its own. ये बहुत similar है हमारे human या किसी mammalian animal brain से. And ये आपको बार बार कोई फंक्शनैलिटी लर्न करनी पड़ेगी, कुछ चीजें जो गलत सीख ली हैं उनको अनलर्न करना पड़ेगा, and then we have to learn some more. And this is something that has even been introduced in the new competency based curriculum for MBBS, these terms. So even as medical faculty, when we are training these days other college faculty for the new curriculum, this is what we constantly emphasize on, that you have to learn, unlearn, and then learn some more till you achieve near perfection. So this is what is happening with the concept of deep learning. The characteristic feature is it works better with big data. So जितना ही ज़्यादा data होगा, उतना ही ज़्यादा deep learning system efficient होता जाएगा. Now, is this a very useful property in medicine? I don't know how many will agree or disagree with me on this, but it is very useful. We'll see how it is very useful in medicine. And then finally, there is one small concept, just a diversionary term, Internet of Things. इसकी बात भी आगे करेंगे, लेकिन just to define, this is basically a network of physical devices, appliances, gadgets which are interconnected via the internet. So this is like your nervous system, thus enabling them, to collect and exchange information. So artificial intelligence and Internet of Things are actually just like the human brain and the human body. So Internet of Things is like the, it's connected through maybe wires or wireless systems, which are like the nerves.
and all these gadgets are different organs of the human body, and the AI is actually the brain, the center. So to make it very simple, artificial intelligence सबसे पहले आया, so ये outermost circle बनाता है. इसी के अंदर there is a subset of machine learning, and उसी के अंदर the innermost circle is deep learning. So AI is a very broad term. Anything that is artificially constructed and displays human intelligence. Machine learning is an approach, like I said earlier, to achieve artificial intelligence. And deep learning is a technique for implementing machine learning. So as you keep learning through millions and lakhs and data subsets, you gradually become just like a fully functional human brain, and that is what we call as deep learning. So deep learning, just to summarize, is a subtype of machine learning, but at a much deeper level. So जैसे एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग नए किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करके, कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पाइनल लेवल पे ही हमें पता है उसका रिस्पॉन्स क्या देना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन हैव टू बी इन्वॉल्व, और उसका एक नया सिचुएशन है, हमें उसके बारे में उसी समय एट दैट मोमेंट वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन. सो अगर वो एक फंक्शनैलिटी आ जाता है किसी भी आर्टिफिशियल सिस्टम में, then that is, we have achieved almost near perfection. We are almost simulating the human brain. So deep learning is composed of neural networks, और इसमें एक्चुअली हम टर्म भी यही यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स का, उसको न्यूरॉन बोलते हैं, और ये कंटिन्यूसली लर्न, अनलर्न और रीलर्न करते हैं. और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल is the online language translation services. All of you must have used Google Translate. We all travel abroad, or there are even within the country, there are so many languages. When we are traveling to different parts of the country, we may need to use Google Translate. आप में से जिस whoever has used Google Translate initially when it was just introduced, बहुत गलतियां होती थी उसमें. Even if you would translate English to Hindi, you would have seen so many things were wrong, and there was always this small button at the bottom, where you had to rate the translation, and you had to give a feedback about the whatever was wrong, or उसमें क्या गलती है translation में. And many people across the country, across the world, they would keep giving their feedback कि इसमें ये word नहीं, ये word होना चाहिए. एकदम literal translation sometimes from English to Hindi or to any other language is not really the correct translation. Now, if you see over the past 10 years, after we have been using Google Translate for so many years, it is giving you almost perfection when it comes to translation. And not only between one or two languages, but thousands and lakhs of languages across the world. So, इस सिस्टम ने धीरे धीरे एक मशीन लर्निंग सुपरवाइज सिस्टम से एक डीप लर्निंग सिस्टम की तरह काम करना शुरू कर दिया. अपने आप वो अपनी गलतियों से सीखता गया और धीरे धीरे बड़ा होता गया और अपनी गलती सुधारता गया. So it works better with big data, and this is what we require in medicine. There's a huge amount of data, especially in a country as wide and as populated as ours. And जितना ही ज़्यादा data होगा, उतना ही ज़्यादा better काम करेगा deep learning system. So आज के date में, it's safe to say that we are living in the era of revolutionary change, and this is the revolution. Artificial intelligence is what is causing the revolution. चाहे हम टेलीमेडिसिन की बात करें, बहुत बेसिक बात है टेलीमेडिसिन की, या आज के जिस हम सेशन की बात करें, आई एम सिटिंग इन बठिंडा, सर इज सिटिंग समवेयर एल्स, द ऑडियंस इज सिटिंग समवेयर एल्स, एंड वी आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर एंड डिस्कसिंग विद ईच अदर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दिस इज वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Online doctor appointments are there, cloud storage is happening, medical records are now being stored online in many countries of the world. Health apps आप सबके पास हैं सारे फोन्स में. वो आपके जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसकी हमने बात करी थी, it connects your smartwatch, it connects your smartphone, it connects your even these days, people's refrigerators are connected, so the calorific value of food and the health benefits of eating something and the health disadvantages of eating something are all being transmitted from one device to the other. So robotic surgery की बात करें, all those who are working in tertiary institutions, like I'm working in AIIMS, robotic surgery is coming up in a very big way. Then 3D printing, आज से 10 साल पहले 3D printing की किसी ने मतलब सुना भी नहीं था इसके बारे में. And today we have an era where even artificial implants, wearable implants are being made by 3D printing. So all these, these wearables such as your smartwatch, they are calculating the number of steps you take in a day. They calculate your heart rate, they calculate your blood pressure. So everything is being transmitted from one device to the other. So एक बहुत बेसिक टेलीमेडिसिन से लेके आजकल हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं वेयर डिवाइसेस नो मोर अबाउट आवर हेल्थ देन वी डू आवरसेल्व्स, एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
सो बेसिकली दिस इज द जर्नी सो फार. आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? आई मीन ऐसा क्या है वर्ल्ड में जो नया हो रहा है, या हम कुछ नया करने वाले हैं? मेनी ऑफ यू मस्ट हैव, यू नो, इफ यू रीड अबाउट एआई रिलेटेड न्यूज, AFMC has started a computational institute. AFMC Pune has started something called as Pragya, Prajna. Pragya, I think that's how they pronounce it. And ये कॉम्पिटिशनल इंस्टीट्यूट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेगा, सो दैट द स्पेशलिस्ट द सिटिंग इन द टर्शरी सेंटर्स ऑफ द आर्मी in, let us say, Delhi, or in the command hospitals in Pune or in Kolkata or in Bombay, they are able to connect with the soldiers who are posted right at the forefront in the border areas where there is a lack of medical facilities or where you don't have a doctor. And वो ना, एक एक चीज होती है उनसे सिर्फ कम्युनिकेट कर पाना, उनसे पूछना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उनको एडवाइस करना. दूसरी चीज होती है वेयर मशीन्स विल ट्रांसमिट ऑल द हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफ द सोल्जर्स टू द डॉक्टर हु इज सिटिंग इन अ बिग टर्शरी सेंटर, and they will be able to advise the treatment, and then the machine will actually ensure that the treatment is given correctly, and that machine will send a warning signal to the doctor if the treatment is not given correctly, send a reminder to the soldier that this is the treatment you have to take at 8 a.m. in the morning, this is the medicine you have to eat at this time in the night, keep checking their blood pressure 24 hours a day. So we are gradually moving towards that. Now, China, if you look at our neighboring countries, it has a smart healthcare strategy and something called as the Chinese Intelligent Medicine Association. और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रिसर्च के लिए, एक्सचेंज के लिए, कॉपरेशन के लिए. ऑल्दो चाइना डज नॉट कॉपरेट विद इंडिया सो मच, बट इट इज एट द फोर फ्रंट ऑफ AI. डायग्नोस्टिक टूल्स को परमिशन मिल गई है चाइनीज FDA के थ्रू. एंड इनके पास एक AI डॉक्टर है जिसका नाम है बायोमाइंड. And this actually it beat a team of neurophysicians in a televised competition जहां पर डायग्नोस करना था ब्रेन ट्यूमर्स, प्रेडिक्ट करना था हेमाटोमास के एक्सपेंशन को. एंड दिस बायोमाइंड डॉक्टर इट एक्चुअली परफॉर्म बेटर देन ह्यूमन डॉक्टर्स. सिमिलरली एक और इनके पास AI डॉक्टर है जिसका नाम है iFlyTech, और इनका जो लाइसेंशिएट एग्जाम है, जस्ट लाइक द नेक्स्ट एग्जाम फॉर एग्जांपल वी हैव इन इंडिया, इसने एक्चुअली बेटर दिया एग्जाम ह्यूमन स्टूडेंट से, एंड आउट परफॉर्म 96% ह्यूमन एग्जाम ने इससे बेटर दिया. So China is really marching ahead when it comes to this. Canada also, it has opened up the world's first French language school of artificial intelligence in a city called Montreal, and it also aims to become a world leader in AI based healthcare. इनके पास एक बहुत अच्छी ऐप है Quality Skin. Now it can correctly diagnose almost up to 2,000 different skin disorders. And it has been, they've done a lot of research and they have shown that even a trained dermatologist can maybe correctly diagnose between 700 to 800 conditions, whereas the AI app Quality Skin can diagnose about 2,000 plus, and this number is increasing. Even as we speak, it may be by 3,000 by now, just by analyzing high resolution images of the affected skin. So all you have to do is use a smartphone, click a picture of the skin lesion, and the AI app will tell you the exact diagnosis, the treatment that is required, connect you automatically with a trained dermatologist sitting somewhere maybe thousands of kilometers away, and just keep monitoring the treatment that is going on. फिर IBM एक कंपनी है, उसके पास एक ऐप है जिसका नाम है वॉटसन. गूगल एक AI फंक्शन को डेवलप कर रहा है जिसका नाम है डीप माइंड. सो डॉक्टर्स जो हैं वो ओवर द इयर्स ग्रेजुअल ट्रेनिंग के साथ, ड्यूरिंग आवर MBBS डेज, देन ड्यूरिंग आवर PG डेज, देन ड्यूरिंग सुपर स्पेशलिटी, वी एक्यूमुलेट नॉलेज ओवर मेनी ईयर्स. और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वॉटसन और डीप माइंड जैसे प्रोग्राम्स जो डीप लर्निंग को यूज करते हैं, एंड दे हैव एनालाइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट मेनी डेकेड्स. सो ऑलमोस्ट जब से हमारे पास रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, रिटन रिकॉर्ड्स, धीरे धीरे सारा कुछ कंप्यूटराइज करके उसमें फीड किया जा रहा है. किस पेशेंट में किस सिम्टम के साथ क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिली थी, उस पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया गया, रिसर्च क्या कहता है इस कंडीशन के बारे में, स्टडीज क्या कहती हैं, आर्टिकल्स क्या कहते हैं, दूसरी कंट्रीज में क्या काम चल रहा है. And this is of not thousands or lakhs, it's about millions and billions of patients across so many years, and within a few minutes. So it will exactly find out the patients from across the world who had the same condition with almost a similar genetic makeup, and then give a treatment protocol that will suit that patient the best. Now, because they have learned from the data of millions of patients, they will know which protocol will lead to a better outcome. It's not possible, as a human doctor to know all this. They will have a better diagnosis, they will have a better treatment outcome. और इस केस में एक बहुत बड़ी चीज जो आजकल हम डॉक्टर पेशेंट कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, if there is improved patient satisfaction,
then obviously there is reduced incidence of friction between doctors and patients. So this actually improves the relationship between the doctor and the patient. Now let us come back to our own country. Present scenario क्या है हमारे पास एक currently we are having an acute shortage of trained healthcare staff. You all agree with me, medical colleges are opening everywhere, private tertiary hospitals are opening up everywhere. We don't have enough people to run the departments. We don't have enough people to join as medical college faculty. All of us everywhere, wherever we may be, we are working in an acute crunch. एंड ट्रीटमेंट का कॉस्ट प्राइवेट में बहुत हाई है. गवर्नमेंट में अगर आप जाते हैं, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट इज वेरी गुड दीज डेज, बट देयर आर लॉन्ग क्यूज, लॉन्ग वेटिंग लाइंस फॉर बेसिक ट्रीटमेंट. Doctors need to diagnose and treat thousands of patients, whether in the government or the private setup. बट ये तो एक पार्ट हो गया ट्रीटमेंट का. अगर वो मेडिकल कॉलेज में है, उनको क्लासेस भी लेनी है, यूजीस की भी, पीजीस की भी, अटेंडेंस भी बनानी है, एग्जाम भी लेना है, पेपर्स भी चेक करने हैं. फिर अगर वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, then they have to write down hundreds of case sheets every day. They have to write discharge summaries, death summaries. They have to look at the reports. They have to go through so many reports, X-rays, lab reports, everything daily. So obviously there is a stage of burnout कि अब एक एक लाइन क्रॉस होती है जिसके बियॉन्ड एक ह्यूमन ब्रेन नहीं फंक्शन कर पाती है. And then this burnout leads to doctor-patient conflict, because probably you lose your cool, or you don't talk to the patient's relatives properly, or you make some error in diagnosis or management, and that leads to litigation, that leads to conflict with the patients and the relatives. So the application of AI, especially to a country like ours, is having immense potential. The benefits can include a very important thing, such as potential to diagnose a rare disease. इंडिया में बैठे हुए वर्ल्ड में वी डोंट नो ऑल द डिजीजेस और द प्रेजेंटेशन ऑफ एवरी डिजीज दैट हैपेंस इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. हमें अपने कंट्री के हर कोने में होने वाली हर बीमारी के बारे में भी नहीं पता. We have never seen so many cases of so many diseases, or we have never seen certain rare presentations of particular disease. And AI ने क्योंकि पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स या पूरे कंट्री के रिकॉर्ड्स देख लिए हैं, उसको उसके थ्रू they have gone through all the patient details, the symptoms, the presentation, everything. So the AI program is very beneficial in this. So it will speed up the process of diagnosis and treatment. I don't have to call up friends and ask them, okay, ये पहली बार देखा है, have you ever seen this? I don't need to go to the library or open up a book. I don't need to search online. I just need an app on my phone. So this will reduce the burden on the doctors and thereby increase your efficiency, your productivity. This will mean lesser fatigue. This will mean better productivity. This will lead to fewer human errors. This will lead to a better outcome, healthcare outcome, or better health outcomes for the patients. So that is the biggest benefit AI has. Whenever I speak on artificial intelligence, this is the first point that comes to mind. Then, like Sir said initially, we are moving gradually from an era of generalized to personalized medicine. So ये एक magic wand की तरह है. हम एक one size fits all program में थे पहले. Especially when we talk about oncology, treatment of malignancies, हम सब जानते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स और जेनेटिक मेकअप का बहुत बड़ा रोल है. एक टाइम पे हमारे पास सेट प्रोटोकॉल्स थे. We had no we didn't have the technology to actually go into the genetic level. So जो भी एक सेट प्रोटोकॉल है वो सबको लेना पड़ेगा. अब एक एरा आ रहा है प्रिसिशन मेडिसिन का. ये स्टार्ट हुआ है ऑन्कोलॉजी से, धीरे धीरे जेनेटिक मेडिसिन एक बहुत बड़ा एक ब्रांच बनता जा रहा है मेडिसिन का, एंड इट इज टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजिंग ट्रीटमेंट इवन फॉर वेरी बेसिक कंडीशंस which are just specific for that particular individual, एक particular individual के लिए, एक particular genetic makeup के लिए. So it's a very revolutionary approach for disease prevention. It takes into account not only your underlying genetics, not only your underlying molecular makeup, लेकिन आपका lifestyle क्या है, आप किस environment में रहते हैं, आपकी biological makeup आपकी body का क्या है, सारी चीज़ों को देखते हुए precision medicine gives you a very targeted approach to treatment. Then there have been certain very interesting recent developments. So there's a institute called the National Institute of Health in USA. They have started a large-scale project which is called All of Us. So इसमें क्या कर रहे हैं, ये precision medicine को extend कर रहे हैं सारी बीमारियों के लिए. Like I told you, we are moving away from using precision medicine only for oncology, only for rheumatology, towards widespread application of this for all diseases. और ये एक नेशनल कोहॉर्ट बना रहे हैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूएस पार्टिसिपेंट्स का, और धीरे धीरे दिस विल इंक्लूड ऑल अमेरिकन सिटीजन्स.
सिमिलरली देयर आर प्रोसेसर्स, इंटेल के बारे में सबने सुना है, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, उसका एक प्रोसेसर है जेनॉन, जो कि ह्यूमन जीनोमिक्स को ऐड कर रहा है कि इट इज लाइक अ लेयर अबव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So it is finding the perfect treatment of for every individual based on his or her genetic makeup. Then there are certain companies like Atomwise. They are using deep learning algorithms to analyze your molecular makeup and predict how a particular drug will act in your body. आपकी बॉडी में उसकी एफिकेसी कितनी होगी, टॉक्सिसिटी कितनी होगी, साइड इफेक्ट कितने होंगे. सो उस हिसाब से डोज का एडजस्टमेंट भी ऊपर नीचे हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर बॉडीज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. और इसी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई नो इट कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग व्हेन यू हियर अबाउट ऑल दिस द फर्स्ट टाइम, बट वेयर डज इंटरनेट ऑफ थिंग फिट्स इन. हमने बात करी थी शुरू में द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या करेक्टली अगर हम बोलें द इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स. So I talked about a smartwatch, we talked about a smartphone, we talked about things like your refrigerator, your laptop computer, everything being connected to each other. Even maybe the air purifier in your room. So everything is connected. And ये कहाँ पर फिट होता है इस पूरे एडवांसमेंट्स में, AI के एडवांसमेंट में. So एक चीज होती है what we call as virtual health assistant. Now how do I describe this? So virtual health assistance is something which will it's like almost like a virtual doctor. So आप जो है आपके स्मार्ट वॉच ने डायग्नोस कर लिया कि आपका ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट जो है इस समय बढ़ रहा है, डिस्पाइट नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, रेस्ट में बढ़ रहा है, एंड इट विल इमीडिएटली अलर्ट अ वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट. उसने ऑलरेडी डीप लर्निंग के थ्रू सीख लिया है कि ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपकी ट्रीटमेंट वो पहले इट विल गो थ्रू योर ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स एंड इमीडिएटली स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डायग्नोजिंग एंड देन मैनेजिंग द कंडीशन. और मैनेजमेंट भी कैसे होगा, वो आपके नियरेस्ट फार्मेसी तक ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देगा दैट दिस इज द प्रॉब्लम विद माय पेशेंट करेंटली एंड दिस इज अ मेडिसिन दैट हैज टू बी डिलीवर्ड टू सो एंड सो एड्रेस. And from there the medicine will actually reach the patient even without any human involvement, and before you know it you have the medicine which will be used to treat your underlying condition. Similarly there is something called as chatbot. अब एक बहुत interesting concept है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दैट वी कॉल एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ये भी आजकल मेडिसिन में बहुत यूज हो रहा है. ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि पेशेंट के रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे हम रिटन लिखते हैं केस शीट्स, और हम रिटन में लिखते हैं इनकी डेथ समरीज, और रिटन में लिखते हैं डिस्चार्ज रिपोर्ट्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स इसको भी पूरी तरह से पढ़ के इसमें से भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है. So it need not be printed or online. It can even go through whatever you have written. It can recognize different handwritings. इसी का एक फर्दर स्टेप है चैटबॉट. सो जस्ट लाइक यू हैव अ चैटबॉट ऑन Zomato, वी ऑल यूज Zomato, एंड व्हेनेवर द ऑर्डर इज डिलेड वी यूज दैट चैटबॉट एंड वी राइट उसमें अपने आप को 4-5 ऑप्शन आते हैं. इज योर ऑर्डर डिलेड, इज योर ऑर्डर नॉट व्हाट यू हैड नॉट व्हाट यू वांटेड, is there some other issue, and just you keep clicking and it keeps taking you to the next step. So without even needing a human interface you are able to solve problems. अगर आपका ऑर्डर ट्रैक नहीं हो पा रहा है आप उसी पे बता सकते हैं. अगर आपका ऑर्डर लेट हो रहा है वो अपने आप आपको कूपन भी दे देता है एक रिफंड का. सो दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी यूज इन मेडिसिन आल्सो. चैटबॉट्स विल ऑटोमेटिकली ओपन अप ऑन योर फोन, और आप उसमें अपने कंडीशन डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स के थ्रू जाके आपको एडवाइस करेगा इस केस में क्या करना है. एंड देन देयर इज अ स्टेप ऑब्वियसली जहां पर वो कहता है कि अब इट इज बियॉन्ड माय कैपेसिटी, नाउ यू हैव टू कंसल्ट अ ह्यूमन डॉक्टर. So what are the challenges as we move ahead? We are obviously moving full force into the world of AI, लेकिन challenges बहुत सारे हैं. सबसे पहला challenge is the fear of adoption among doctors, fearing large scale job cuts. So people feel कि robots सब surgery कर लेंगे. दिल्ली में बैठे डॉक्टर साहब पूरे कंट्री में कहीं पे भी रोबोटिक सर्जरी कंडक्ट कर सकते हैं. मुंबई में बैठे डॉक्टर पूरे कंट्री में लेट अस से कुछ कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन दे सकते हैं. सो विल आई एज अ डॉक्टर बी रियली रिक्वायर्ड ऑन द ग्राउंड, और विल सम सीनियर वेल नोन पर्सन जस्ट टेक ओवर all my work? But remember the artificial world can never provide that human touch. ये बात पेशेंट्स को भी हम हमेशा एम्फसाइज करते हैं, स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं कि जो एम्पैथी है, जो सिंपैथी है, जो आप पेशेंट से बात करते हैं, जो एक ह्यूमन टच पेशेंट के साथ होता है, जो आपकी अपनी जजमेंट स्किल्स हैं एंड जो क्रिएटिविटी है, दैट इज समथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट डू. जितनी मर्जी तरक्की हमने कर ली थी, फिर भी जब कोविड आया था उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल्ड मिजरेबली बिकॉज इट वॉज टोटली न्यू.
इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. उसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बहुत आगे चले गए थे रिसर्च में, एंड दे हैड एक्चुअली कम अप विद सम नोवेल सॉल्यूशंस. Then there's a very big question mark. There's an ethical question in an artificially managed healthcare system. Let us talk of robotic surgery. In that case, who will have the final word after the machine has delivered a decision? So if the machine feels the surgery has to be done from a certain angle, or if the machine feels that the diagnosis is a certain malignancy, who has the final word? Will there be a human who will check everything, या जो machine ने बोल दिया वो सही है? और अगर कोई गलती हो गई then what? So where does the final liability lie in such case? आज के केस में where doctors are being increasingly embroiled in legal issues also by patients, artificially intelligent world में कैसे चलेगा? अगर आपके रोबोटिक सर्जरी में रोबोट ने कोई गलती कर दी सर्जरी करने में, and there is no human being who is running the robot, then you know, how do you legally pursue that if there is some error? If the app made an error in diagnosing a skin condition, gave a wrong treatment, how do you pursue this? And then there's a very important legal issue or an ethical issue about the large amount of data. So privacy concerns बहुत हैं. यूके में नेशनल हेल्थ सर्विसेज के थ्रू अभी कुछ साल पहले बहुत सारे लोगों का डेटा ब्रीच हो गया था. एंड in this era of internet of things, privacy is a very important issue. Many people do not give permission to healthcare apps. They delete healthcare apps from their phones also because of the fear that these apps are constantly monitoring your activities, constantly monitoring your movement. आपकी आपकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, आप दिन में किससे बात करते हैं, किसी को क्या बोलते हैं. Even the camera function of your phones, of your laptops is being used. We all know that. So privacy concern is a real issue. And इतनी सारे devices जो आपस में connected हैं, कोई checks and balances नहीं है. There is नाम के लिए there are cyber crime cells, but who do you complain in case your app knows everything about you? आप किसे complain करेंगे? If you try to apply for insurance and the insurance company already knows the conditions you are suffering from, that is a breach of privacy. So there are many such issues. But upcoming issue that has recently been described in many studies is something called as healthcare equity. अब इसकी बात हमने इनिशियली करी व्हेन संजय सर वाज डिस्कसिंग द टॉपिक, एंड वी टॉक्ड अबाउट एआई वॉरफेयर. एआई वॉरफेयर के पहले सबसे पहली एक क्वेरी है, दैट इज हेल्थ केयर एक्विटी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेटन्स टू सेगमेंट द सोसाइटी इनटू सुपर एलीट, सेमी एलीट्स एंड हैव नॉट्स, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस टू एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ एआई बेस्ड हेल्थ केयर. तो जो कुछ कंट्रीज के पास कोविड के टाइम पे जैसे बात हुई थी, कुछ कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनके लैब्स में कुछ काम चल रहा था, एंड देयर वर एलिगेशंस कि ये लैब में एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस है, इसको जानबूझ के छोड़ा गया है. कुछ ऐसे सबसेट्स हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन पे जिन पे ज्यादा असर पड़ रहा है इस वायरस का, कोविड वायरस का, एंड कुछ ऐसी पॉपुलेशन हैं जिनमें इम्यूनिटी अंदर से पहले से थी या ऑलरेडी या डाली गई आर्टिफिशियल वे में. सो कुछ ऐसे देश हैं वर्ल्ड के जिनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो हमेशा पीछे रह जाएंगे. So this will increase the gap between the countries or the population, even within the country. Let us talk about our country. For the first time, people who have access to artificial intelligence healthcare, they will be faster, they will be smarter, they will be stronger. So designer babies concept is coming up. People are genetically engineering even their offspring. Cord blood banking is there, so people have an option later on. Stem cells are coming up in a big way. So these people will be biologically, genetically, or even bionically superior to others. Bionically means if they have access to AI, let's say 3D printing, they will have probably better joints, they will have better bones, they will have faster acting muscles probably in the future, skin which is fireproof, hair which never falls. I mean, it can be a totally a robotic kind of a life. So then there are genetic disorders जिनकी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है. इनकी सडनली स्टेम सेल्स के थ्रू या जेनेटिक मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट आ गई. It can even start prolonging life, and it can potentially open the door to the next phase of human evolution. So एक ऐसा सबसेट आ जाएगा, कुछ देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी या कुछ लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, कुछ कंपनीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, that they will become the masters of healthcare or human life across the world. और जो लोग इस चीज को एक्सेस कर पाएंगे, those who are economically well to do and those who can buy these things, आज की डेट में भी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन. इट मे बी
more available than the past 10 years. It is more affordable than the past 10 years, but it's not something that everyone can still afford. So क्या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फ्यूचर में चल के लेटर से उनको कोई कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन, वो उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं अपने ही स्टेम सेल्स यूज करके, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिमिलर कंडीशंस को सफर कर रहे हैं लेकिन पैसे की कमी से नहीं एक्सेस कर पाएंगे इस ट्रीटमेंट को. So this will divide the world into haves and have nots. So there will be biologically, genetically, bionically superior race एक बन जाएगी. Human evolution में एक step ऊपर. Sir ने Homo sapiens की बात करी. So from sapiens squared we might actually have to move on to sapien cubed. Certain life saving technologies ये monopolize हो सकती हैं. अब आप कोविड का ही एक एग्जांपल देखिए. There are certain vaccines which were under complete monopoly of certain Western companies. So वैक्सीन जो है उसका एक्सेस वो देंगे ही नहीं किसी को unless you shell out a huge amount of money. India on the other hand, since we have a very different healthcare system, यहाँ पे free में भी provide होता है healthcare, और you can pay your there is a private sector where you can pay for better healthcare, but there is also a government sector where everything is available. The lines are longer, the queues are longer, but you have very well trained doctors and you have all the best treatment which is there. But that is not true for the rest of the world. कुछ ऐसे देश हैं जहाँ टोटली गवर्नमेंट सेक्टर में है हेल्थ केयर, लाइंस आर रनिंग इनटू 10-12 years फॉर बेसिक प्रोसीजर्स. कुछ ऐसे कंट्रीज हैं वेयर इट इज कंप्लीटली इन प्राइवेट हैंड्स एंड इफ यू डोंट हैव इंश्योरेंस यू कांट एक्सेस इवन अ ट्रीटमेंट फॉर अ बेसिक फीवर. सो व्हाट इफ दिस इज लेवरेज्ड बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वेरी नैरो गेन्स. और यहीं पे वो बात आती है कि अगर ये गलत हाथों में चला गया, लेट अस से इसी तरह का जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स अगर ये किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ गए. आज हम बायो वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात करते हैं, बट कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एआई वॉरफेयर इन द फ्यूचर? जिस कंट्री के पास एआई है दैट कैन यूज इट टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द हेल्थ केयर सिस्टम, लेट अस से बीइंग रन बाय अदर कंट्रीज, completely monopolize the healthcare of human beings in other parts of the world. That is something we have to think about. So अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं? हेल्थ केयर स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं प्रॉपर यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज के लिए. इससे डरना नहीं है. वी हैव टू कंस्टेंटली एम्फसाइज दिस इज एन एडिशनल बेनिफिट. इट्स नॉट रिप्लेसिंग द ह्यूमन डॉक्टर. कंट्रीज विल हैव टू सिट टुगेदर. अभी तक इसमें कोई एक इंटरनेशनल लेवल पे WHO सर ने जैसे मेंशन किया, they have issued the first global sort of principles. So WHO has said कि human autonomy should always remain protected. पहली चीज. So privacy और confidentiality हमेशा रहेगा. Patients को consent देने के बाद ही, patient के consent के बाद ही you can use AI healthcare for treatment. Then you must promote human well-being and safety in public interest. The transparency की बात करी है WHO ने. Responsibility, accountability की बात करी है, that we need some international body which can take accountability for this, and ensuring inclusiveness and equity so that it is equally accessible to everyone. It should not be that there is a particular country or a particular subset of people that monopolize the access. So इसको एक sustainable option बनाने के लिए WHO has given certain principles, but how much will they be followed, we really don't know. So human interest has to be kept above profit motives. और यहाँ पर as doctors we have a great responsibility. At least our organization should ensure that we try and make this accessible. We teach our students about the benefits of making it accessible to all, to the poor and to the rich, to everyone in the country at least. So what we need is democratization of AI-based healthcare. We must remember, however, as we come to the end of the session, that AI technologies are here to stay. So we have to adapt and we have to learn to live with them, because if we are not ready, we risk becoming completely irrelevant in the future, and that is something that is absolutely not an option. So artificial intelligence is a revolution. It is here to stay, but we have to adapt and learn to live with these technologies. So at the end, I'll summarize by giving you the option to decide, is it something that is dangerous? Is it an asset that you can use to your advantage? Is artificial intelligence something that will make you as a human doctor redundant? And will humanity or the human touch or human empathy always win in the end? So with this, I'll come. I think the references have got squashed to the top of the slide, but we'll come to the end of the session. Thank you so much for a very, very patient hearing. Thank you, Dr. Niket. बहुत मजा आया आपसे बात करके. And for everybody who is listening, this is the way a medical educator should be. Confident, competent,
कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट, बट एट द सेम टाइम ह्यूमेन एंड हम्बल। तो ये जो ये कॉम्बिनेशन है आजकल दिखता कम है दुनिया में, तो बहुत अच्छा लगा देख के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सपना जैन जी कहती हैं दैट एआई इज सर्टेनली एन एसेट एंड वी शुड इक्विप आवरसेल्व्स। जैसे लिटरेसी की बात करते हैं तो ऑल ऑफ अस हैव टू बी लिटरेट in English or Hindi, and we have with us Dr. Noor Aga Danish, who is from Kabul in Afghanistan. तो वो आपको सलाम भेज रहे हैं। Good evening, sir. And Dr. Danish is literate in Pashto and in Dari, and I think, of course, in English, and he speaks Hindi very well. So, multiple kinds of literacies, numeracies we have to learn. तो अब ये उसमें ऐड हो गया कि artificial intelligence भी हमें सीखना है। बट डॉक्टर निकेत, आपकी बातें सुनते सुनते आई वाज रिमाइंडेड ऑफ अर्जुन इन द महाभारत। तो अर्जुन की बड़ी सारी एक खासियतें थी। एक खासियत थी दैट ही वाज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब सव्यसाची थे वो। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब वो लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों के साथ इक्वली काम करते थे। तो एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बी एम्बीडेक्स्ट्रस इन टर्म्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी and also touch, the human touch together at the same time? कितना चैलेंजिंग है ये टेक्नोलॉजी और टच को एक साथ इस्तेमाल करना? इसके फायदे, इसके नुकसान, कोई चैलेंजेस जो आपने फेस किए हो लाइफ में? So, sir, that's a very good point you've raised. Being ambidextrous, or I would say multidextrous for that matter. Let us say again, we'll take up an example of something like robotic surgery. So आजकल बहुत बड़े वे में this is being taken up, and लेकिन before we don't tell the patient just कि डॉक्टर से बात नहीं करनी, आप आइए सिर्फ लेट जाइए, रोबोट अपने आप सर्जरी करेगा और चला जाए, आप उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे और चले जाइए. So you need the doctor to actually convince the patient to get the surgery done, and a robot or an artificially intelligent system cannot do that. So अगर उसकी सचमुच में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पहली चीज, पेशेंट के मन में उसके बारे में क्या डर है. पीपल हैव क्वेरीज लाइक सर्दियों में ये सर्जरी हम कराएं या गर्मियों में कराएं, दिन में कराएं, रात में कराएं, इसके ऊपर ठंडा ले सकते हैं कि गर्म ले सकते हैं. दीज क्वेश्चंस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विल नेवर अंडरस्टैंड. इन मेडिसिन ओपीडी पीपल आस्क अस कि दूध के साथ दवाई लें या पानी के साथ लें, कुछ खाने के पहले लें, खाने के बाद लें. ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं समझ सकता है. So जब हम ह्यूमन बीइंग की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, then the human touch has to be there. Without it, it is just a robotic world, and we cannot live in a robotic world. चाहे खाने के प्रेफरेंसेस की बात हो, अब जोमेटो पे हम आर्टिफिशियली सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस तो मेरी अपनी है, वेदर आई वांट टू हैव अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिश. आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन है या नहीं है, बहुत सारी चीजें मन के बेसिस पे हैं. पीपल दे हैव सर्टन थिंग्स इन देयर माइंड की वहम करते हैं किसी चीज का, इस दिन नहीं कराएंगे सर्जरी, इस डॉक्टर से नहीं कराएंगे सर्जरी, इस घंटे दे वांट द बेबी टू बी डिलीवर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, दे वांट these quirks are there in the patients, and this is what is the beauty of humanity. Every person is different from each other. It's not a robot or a computer which is all same. So we cannot program human emotions. इसीलिए artificial intelligence is it's making my work easier. As a doctor I can use it, I should definitely use it, but it cannot replace me. I should not allow it to replace me. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसको एक लिमिट पर रोकूं और अपने पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करूं, उसके रिश्तेदारों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करूं, एंड जहां इसका मुझे फायदा होता है वहां इस्तेमाल करूं, जहां मुझे नुकसान लगता है वहां इसको अपनी लाइफ से हटा दूं. एक्चुअली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट नहीं कर रहे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ रहे जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं. One word is abdicate, another word is abnegate, ABNEGATE. हम अपने राइट्स को, अपने हक या हुकूक को एब्निगेट भी नहीं कर रहे. जो हमारे हक हैं एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज अ पर्सन हु इज केयरिंग फॉर ह्यूमैनिटी, हमारे हक हुकूक भी हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेवारियां भी हैं. नीदर आर वी एब्निगेटिंग आवर राइट्स नॉर आर वी एब्डिगेटिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट सर आपको And also, sir, I would like to add, even as a patient, even as a patient, I mean, we have to educate our patients also कि ऐसा ना हो कि आपसे किसी रियल डॉक्टर ने बात ही नहीं करी, आप सिर्फ गए, आपको किसी मशीन के सामने लेटा दिया और उसने आपने आंखों का स्कैन किया और सीधा लेजर मार के आपकी आईज की ट्रीटमेंट कर दी. आई मीन, इवन दे मस्ट एज अ पेशेंट, इफ आई एम एज अ पेशेंट गोइंग टू अ डॉक्टर, आई ऑल्सो राइटफुली शुड डिमांड टू मे बी स्पीक टू अ ह्यूमन डॉक्टर, चाहे वो कहीं भी बैठे हो.
ताकि वो एटलीस्ट मेरे इमोशन समझें, मेरे मन का डर समझें, मेरी क्वेरी में जो व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स एज अ मेडिकल एजुकेशनिस्ट, व्हेन वी टीच कम्युनिकेशन स्किल्स, we always say that verbal is one part and then there is a non verbal or the hidden aspect of communication, कि उन्होंने हाथ कैसे क्रॉस किए बैठे हुए और उन्होंने आपको देखा कैसे, उनका फेस का मूवमेंट कैसा है. सो उससे आपको पता चलेगा कि ऑल्दो आंसर बहुत पॉजिटिव है, उनकी अंदर जो है दे हैव अ वेरी नेगेटिव अप्रोच टू व्हाट यू आर सेइंग. So all that will require a human being to be present. So you're right, as members of the public भी हमारे rights हैं और हमारी responsibilities हैं. हमारी responsibility हम अपना ख्याल रखें और हमारा right है कि हम सही अपना ख्याल ढूंढें या सही मेडिकल केयर या हेल्थ केयर हम एक्सेस करें. डॉक्टर निकेत, अनामिका अनु जी आपको गुड इवनिंग कर रही हैं, एंड सनी ग्रोवर हु इज वेरी सनी पर्सनालिटी फ्रॉम करनाल इन हरियाणा, ही सेज हाय टू यू. सरताज सिंह जी, विनायक शर्मा साहब एंड संजय गांधी जी भी लॉग्ड इन है, एंड सत्येंद्र सिंह जी, एन एडवोकेट फॉर हेल्थ, सेइंग यस. एक कमेंट आ रहा है मंजू शर्मा मैडम से, अ वेरी इंटेलिजेंट टॉपिक एंड यू आर ब्लेस्ड विद नेचुरल इंटेलिजेंस आल्सो, though you've spoken about artificial intelligence. एक ऑफ ट्रैक Thank you so मोहम्मद much. साहब Thank you. पूछते हैं, जब हम छोटे थे तो टिंचर आयोडीन यूज होता था, लाल नीली दवाई यूज होती थी फॉर मेनी थिंग्स, ऑल द वे फ्रॉम टॉन्सिलाइटिस अप टिल इंजरी. आजकल मेडिसिन में यूज होता है क्या आयोडीन कहीं पे, या उसका नाम नहीं बदल गया सर, है? बस हाँ नहीं, और that reminds me sir, I was looking at that comment actually the other day. We were talking about, जैसे हमने शुरू में बात करी newer viruses, newer bacteria. Recently me and my family, we had an episode of viral fever, and our fever was touching 103 for maybe a week, almost a week, 10 days, and not coming down with even 2 courses of antibiotics. And that is when I was speaking to a very senior physician who was one of my mentors in Delhi, and he told me, Niket, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो पहले यूज करते थे आज से 100 साल पहले, वेस्टर्न मेडिसिन की ट्रीटमेंट्स, नॉट अबाउट आयुर्वेदिक और लोकल ट्रीटमेंट्स, बट वेस्टर्न मेडिसिन की कुछ ऐसी मेडिसिन है लाइक क्लोरामफेनिकॉल. ही सेड वी नीड टू एक्चुअली यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट वेदर दीज ड्रग्स आर रियली यूजफुल फॉर द न्यूअर वायरसेस, न्यूअर बैक्टीरिया. हम भूल गए उन ट्रीटमेंट्स के बारे में, and we have totally started focusing on, let's say, the third or the fourth generation of antibiotics, and we have forgotten that we had a very good first generation, very cheap, it's very cost effective, it can be easily used, produced very easily, लेकिन हम उसको आजकल यूज ही नहीं करते हैं. So it's reminded me of that comment. पॉइंट वेल टेकन. अली नजाकत साहब आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं, एंड आपने स्टेम सेल्स की बात की थी, तो वो जी पूछते हैं, आर स्टेम सेल्स यूज्ड फॉर हार्ट फेलियर? Is there any No sir, research going on in this field? Sir, stem cells are heavily, it's actually correctly so, it is regulated by the Indian government. Currently, only for hematological malignancies, research is allowed on stem cells. बाकी जो मतलब आप कर सकते हैं various centers में, और patients में भी use कर सकते हैं under proper permission from the government. Apart from hematological malignancies, as of now, the use of stem cells is not allowed. Only permission has to be taken from the government agencies. बहुत ही मिनिमल अभी काम इस पे शुरू हुआ है. एम्स दिल्ली is taking the lead in this, many other tertiary institutions. But when it comes to blood diseases, hematological diseases, we are quite, we are quite ahead. And I think that is one of the first fields in which we will start using stem cells very soon, I feel. मोहिनी मैडम, who works in social psychiatry, ये पूछती हैं कि मेंटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या लेन देन है? कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, chatbots, can they help us improve our health? Like, for example, can they be helped in preventing suicidal thoughts, ideation, actions? That's a very good question. Thank you, ma'am. इसके बारे में sir, I read an article about almost a year back, I think. I don't remember the name of the author. And ये एक बहुत important point आया था. And he was actually talking about, when people go on to helplines and they wish to speak to a person. और ये problem जो Western countries में आ रही है, where they are, where the family structure is different from ours, and sometimes you don't have support, emotional support at all, because you are totally living alone. आप बस काम पे जाते हैं, और काम भी वर्क फ्रॉम होम जब हो गया था कोविड के टाइम पे बहुत बात हुई इसकी. सो योर इंटरेक्शन विद ह्यूमन बीइंग वाज वेरी लिमिटेड. इन केस ऑफ आवर कंट्री, हम लोग अपने फैमिली स्ट्रक्चर में वापस चले गए, विच इज वेरी गुड थिंग. सो नाउ वी हैव आवर पेरेंट्स और आवर सिबलिंग्स और आवर चिल्ड्रन, एवरीवन who are there to take care of us, emotionally support us. Whereas in the Western world, people are stuck in big cities, all alone, working from home, not meeting human beings for many, many months at an end. And this had a very bad effect on mental health. So इस पे sir एक query थी, even in that article, that when it comes to mental health, many times people may need to speak to a real human being. लेकिन जहां तक symptoms को diagnose करने की बात है, there can be certain keywords or red flags
कि अगर वो कॉन्वर्सेशन में वो रेड फ्लैग के कुछ ऐसे वर्ड सेल्फ हार्म के बारे में या कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स पिकअप कर ले कॉन्वर्सेशन में, which is what we call as natural language processing. There are certain programs, then it can immediately alert a human being or a human doctor who can immediately get in touch with that person. So limited use, but definitely a human touch is more than required. एंड डॉक्टर पवार सर पूछते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पीडियाट्रिक्स, artificial intelligence in neonatology. One of the last standing barriers towards reducing mortality rates across the world is neonatal disease. मतलब वहाँ पे even developed countries भी काबू नहीं कर पा रही हैं. We have hit a kind of a not a glass, but I think a concrete ceiling. Yeah. So again, sir, when it comes to genetic diseases which are commonly seen, जो childhood में शुरू होती हैं, neonatal age में शुरू होती हैं. So when we talk of precision medicine, genetic medicine, अगर हम इसको पहले ही आइडेंटिफाई कर पाएं या बच्चे के पैदा होते ही ऐसे प्रोग्राम्स हो जो बता पाएं कि इस जेनेटिक मेकअप में फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम आएगी. सो हमने देखा है लाखों ऐसे बच्चों में जहाँ पे इस तरह का जेनेटिक मेकअप है, ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. मे बी लेट अस से हेमाटो ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक हेमाटो ऑन्कोलॉजी, व्हिच इज कमिंग अप इन अ बिग वे इन मेनी टर्शरी सेंटर्स. So if they can diagnose right when the child is born, or even when the child is in a fetal stage, for example, that in the future this child may have such and such condition, so we can definitely start making a precision targeted treatment protocol, and maybe with the use of stem cells in the future, we may have an era where अगर उनके हमने stem cells शुरू में ही रख लिए हैं, let's say cord blood banking has been done, then neonatal diseases can, we may be able to break this concrete ceiling as you mentioned. Anshu Singh ji is saying namaskar to you. And another question is, what do you feel are the major challenges now from a Bathinda point of view, Malwa point of view, that is the region of Punjab where you work, या पंजाब या इंडिया, साउथ एशिया, किन चीजों पे गवर्नमेंट को या रिसर्चर्स को फोकस करना चाहिए? So I think the biggest challenge is funding. So we need funds to actually start bringing in or procuring technology of artificial intelligence. कोई भी region हो, funding is the biggest number one issue. And then, of course, like we said, the challenge is the fear of incorporation. So we have to train our healthcare staff. As soon as that fear is removed from our mind, people will, I think, be more receptive towards incorporating AI-based technology in healthcare. एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है. आपने बात की रोबोटिक सर्जरी की. अब आप और मैं, डॉक्टर निकेत, हम दोनों फिजिशियंस हैं. So maybe the maximum surgery that we would have done till today is maybe cutting our fingernails. तो अब जब ये रोबोट आ जाएंगे फिर तो मैं भी सर्जन बन सकता हूँ ना? So ये सर जब मेडिकल एजुकेशन में बात करते हैं, we call this as transdisciplinary medical education, where there will be probably a future, and it may be a very near future, जहाँ पर आपने पीजी किसी सब्जेक्ट में करी है, नहीं करी, किसी भी सब्जेक्ट में करी है for that matter, we say that that person can teach any subject because the artificial world will gradually take over. So yes, but then it requires years of training in a particular subject to recognize certain risk factors, to recognize certain unseen challenges that the machine may not be able to diagnose. So अभी तो सर इसका नहीं लग रहा है near future में ऐसा scenario where we can start doing cross disciplinary practice, but that may be, I mean, since you mentioned it, it may be an interesting field in the future. So that means I should also be on my toes, and मैं अकेले अपने सब्जेक्ट की नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई करता रहूं, एंड बाकी डिसिप्लिन्स की भी. सर एक मेडिकल क्वेश्चन आ रहा है. दिस इज फ्रॉम स्वप्ना मैडम. माय मदर इज ऑन CPAP. तो एक तो डॉक्टर निकेत, फॉर द एंटायर ऑडियंस, व्हाट इज CPAP? माय डैड इज ऑन CGM, कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग. ये दोनों टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स हैं. Doctors' advice, empathy, and technology, everything is working together to help improve their health. And हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, स्वप्ना जैन मैडम कहती हैं, मगर डॉक्टर ने हमें बताया कि ये टेक्नोलॉजी क्या है. एक जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वेलोर में, हैं प्रोफेसर नितिन कपूर, जो एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं. So the doctors tell us about the technology, and they tell us how to use it as well properly. So your comments on this? Yes, so that is what I said. So democratization of this AI in healthcare. So technology, we have to encourage our patients to incorporate it, and उसके लिए उनको हमें train करना पड़ेगा कि उससे डरना नहीं है. हम आपके पास हमेशा हैं. If you have any queries, you can always contact us and ask us. But if it is helpful for you, then there is no harm in incorporating. Similarly, as healthcare professionals, अगर हमारी वो help कर रही है चीज, हम उसको जरूर incorporate करें. लेकिन wherever we feel it is harmful, I think we should stay away from it.
एक जो डेमोक्रेटाइजेशन की बात हुई बिफोर वी कंक्लूड, कई बार कहा जाता है कि डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर गेट कीपर्स Yes, sir. टू हेल्थ, एंड बहुत लोग खफा भी होते हैं इससे भी, व्हाई डू आई हैव टू गो थ्रू अ गेट कीपर। इसके प्लस भी हैं माइनस भी हैं, बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, हर कंट्री में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, एक कायदे कानून के साथ लोग आते जाते हैं। Yes, तो ऐसे yes. हेल्थ केयर सिस्टम में जब आप एडवाइस के बगैर घुसेंगे, इट इज पॉसिबल यू माइट एंड अप क्लाइंबिंग द रॉन्ग कोकोनट ट्री। इट इज So very पॉसिबल। similar to, yes, very similar to over-the-counter drugs. Let us say, if you don't take a proper prescription, it can actually be harmful rather than beneficial, or you may end up treating yourself, over-treating or under-treating yourself, which is contrary to what is actually what we want for you. So they should not see us as their enemy. हम उनके दुश्मन नहीं हैं. They should not call us as a gatekeeper, but rather some sort of a, I would say a helper, a facilitator. Maybe that's a better way. A partner. Partner, yes, sir. In the aim, in the journey towards achieving better healthcare, it is Yes. possible, for example, कि आप गूगल पे गए, आपको दिखा कि हाँ जी इस कंडीशन के लिए तो सर्जरी बहुत बढ़िया है। एक मेरे फैमिली फ्रेंड थे, तो उन्हें ये पता चल गया जी पार्किंसंस डिजीज के लिए सर्जरी होती है, तो हम तो जी सर्जरी करवाएंगे। बट जो उससे पहले 33 करोड़ बाकी अलग अलग ऑप्शंस हैं पार्किंसंस की, जो बहुत सिंपल हैं, सरल हैं, सस्ती हैं, वो क्योंकि उनको नहीं दिखाई दी गूगल पे, तो he feels that they are not important. So actually, we should credit everybody. Like, let's take the Jain family's example. Credit actually goes to the Jain family for following self-discipline, Atam Niyantran, and for Yes, sir. working in collaboration with the doctor. And we thank the team from CMC Vellore, including Professor Nitin Kapoor, for taking care of each other. Dr. Niket, it's been great being with you. हमारे साथ फराज भी हैं backstage. So, Faraz, 2 questions for you. First of all, could we show a certificate of appreciation for Dr. Niket Verma? And दूसरा एक googly question फराज के लिए. And I love giving googlies, है ना? Throwing balls. तो फराज, one nice thing that you learned today from Dr. Niket. Now, Faraz is a shy boy. फराज रहता है कोलकाता में, and फराज बहुत शर्माता है. Lovely ladies के आगे तो आता ही नहीं है वो बिल्कुल. So let's wait for 10 seconds. Faraz, is that okay? Otherwise, he must be busy in extracurricular activities. Faraz है, naughty बच्चा भी है, shy भी है, naughty भी है. But Dr. Niket, it's been great being with you. आपने इतना मुश्किल टॉपिक, इतना वास्ट टॉपिक, इतनी आसानी के साथ, इतनी सरलता के साथ हमें सिखाया. We are grateful for that. And Thank like we you. said, तो जैसे मेडिकल एजुकेटर को होना चाहिए, confident and competent, but at the same time, humble and humane. ये सब combination हमें दिखाई दी, and that is another type of being ambidextrous or multidextrous. The other thing we saw was technology and empathy. Okay, so Faraz points out. So what Faraz has learned is, Dr. Niket, would you like to read that out from the private chat? I'll just read it, sir. 1 second. Yeah. Okay. So being updated with time and technology, with being smart instead of hard work, and the era of digital India, and most important, the doctor with the brain of technology is a deadly combination. So डॉक्टर निकेत, ऐसा कमेंट तो पहली बार मिला होगा ना आपको, डेडली कॉम्बिनेशन वाला. वो तो मेरिट वालियों ने भी नहीं दिया होगा ऐसा कॉम्बिनेशन, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हाँ जी. कमेंट आपको. इट्स बीन ग्रेट. हमें बहुत मजा आया सबसे बात करके, एंड दीज आर न्यू थिंग्स दैट वी आर लर्निंग अबाउट. केके मेड टॉक्स का उद्देश्य यही है, एम ये है दैट वी लर्न मोर अबाउट हेल्थ, सो दैट वी आर अवेयर एंड हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, एंड वी ऑल वर्क टुगेदर एज वन टीम towards a healthier and a happier nation, towards a healthier and happier future. Thank you once again, Dr. Verma, for being with us. Dhanyavad, shukriya, mehrbani, and Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Jai Hind, sir. Thank you so much for the invitation. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Jai Hind. Thanks, Faraz. तूने शेव नहीं की हेलो ना आज? सर, मुझे वेलकम. पता था, मुझे पता था. चल निकेत को तो शक्ल दिखा दे, शेव वाली, नॉन हाँ शेव सर, वाली. जरूर जरूर सर. थैंक यू निकेत. सर दिख रहा है क्या? हाँ, आगे. निकेत अब तो मैं चला गया मेड टॉक्स मेरा. पे भी आता हूँ सर, के सर के इंस्टाग्राम चैनल पे ही. उस पे भी सर होते अच्छा हो. टॉपिक था, बहुत सही टॉपिक था. हाँ, ये डिफरेंट था, बिल्कुल नाइस था.